AB and BA will be equal in one case. Aseta kono jodi A equal to B हुए. Hala? Number 2. Matrix multiplication is associative under condition. ये भी सब बड़े नुए. किसी condition रे ये कौन होगा associative हो. हाला? सब बड़े नुए. अच्छा केमती? That means I'm saying A into BC. Okay, A into BC will be equal to AB into C. এটা কেতলা হবো? Conditional when both sides are defined. এটা भी सबले नुए केतला हबो ना जेतला दी पट डिफाइन होतो. अच्छा बर्तमान ए दी पट डिफाइन हबो त माने कोन? फर्स्ट लेफ्ट साइड को देखो. फर्स्ट हमर लेफ्ट साइड डिफाइन हवा दरकार. अच्छा लेफ्ट साइड डिफाइन हवा पय हेले फर्स्ट BC डिफाइन हवा दरकार. एटा के डिफाइन हवा दरकार BC. एटा BC define हवा पे हेले number of columns of B should be equal to number of rows of C. इटा क्या बात है? First BC पाई number of columns of B should be equal to number of rows of C. इटी का बात है? First BC पाई अच्छा पुणे A into BC define हवा दरकार. A into BC पाई पुणे number of columns of A should be equal to number of rows of BC. है ताले मोर लेफ्ट साइड पे आगे इतनी कंडीशन रहबो. फर्स्ट BC डिफाइन हवा दरकार. BC पाई number of columns of B should be equal to number of rows of C हवा दरकार. पुणी A into BC डिफाइन हवा दरकार. A into BC पाई number of columns of A should be equal to number of rows of BC. इतनी का हवा दरकार. इतनी के लिए लेफ्ट साइड डिफाइन हो. अच्छा पुणी राइट साइड डिफाइन हवा दरकार. अच्छा राइट साइड डिफाइन हवा पाई हेले फर्स्ट AB डिफाइन हवा दरकार. AB आगे डिफाइन हवा दरकार. AB पाई number of columns of A should be equal to number of rows of B. पुणी AB into C define हवा दरकार. तापाई number of columns of AB should be equal to number of rows of C. इतनी का हवा दरकार. ताले जाएंगे matrix multiplication will be associative. सेट में condition will लिखा है under certain condition. अच्छा number 3. Matrix multiplication is distributive over addition and subtraction. हेले एठी पुणी कंडीशन अछि. एटा भी सब बळे हबो नाही. Under condition, that means A into B plus minus C equal to AB plus minus AC. अच्छा एठी भी कंडीशन कोन? कंडीशन हला when both sides are defined.
हला दीपट डिफाइन हवा दरकार LHS should be defined as well as RHS should be defined left side भी define हवा दरकार right side भी define हवा दरकार अच्छा define हवा दरकार ता माने कोन एठी first B plus C or B minus C should be defined B और C को मैं add कि मैं subtract करि परथवा दरकार addition कि subtraction करिया पई हेले से मानकर ऑर्डर समान थिबा दरकार ऑर्डर जे समान नै तल ताको हमें ऐड करि परिबानी किबा सबट्रैक्ट करि परिबानी सो ताहले फास्ट हमें इधरे को ऐड करि परथुवा दरकार किबा सबट्रैक्ट भी करि परथुवा दरकार B और C रो ऑर्डर समान थिबो पुनी A into B plus C should be defined A into B plus C माने एठ हमरो A रो प्रोडक्ट दरकार B plus C सहित फास्ट लेफ्ट साइड पे हमरो it was the order of B should be equal to order of C. It is essential. Now B plus C period. अच्छा पुणे A into B plus C पाइन A into B plus C पाइन condition कौन number of columns of A should be equal to number of rows of B plus C इतिका वाला क्या तो लेफ्ट साइड पे इतिका वाले कंडीशन है पुणी राइट साइड पे समझे कंडीशन रहइबो हला ताहले जाई मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन विल बी डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन एंड सबट्रैक्शन अनदर प्रॉपर्टी if A is a square matrix A मनकर ओडे square matrix A is a square matrix and IH an identity matrix of same order A गोटे मनकर square matrix I होची identity matrix of the same order then A into I is equal to I into A is equal to A A रे जदि हम I multiply करिबा किबा I रे A multiply करिबा in both cases we'll get the matrix A this is another property এটা বহুত क्वेश्चन में अप्लाई हेबो दिस इज वेरी इंपोर्टेंट हला नंबर 5 if A is a matrix and is multiplied with a suitable null matrix with a suitable null matrix जे कौन सी मैट्रिक्स में ए मनकर गोटे मैट्रिक्स ताको में कास तो मल्टीप्लाई करिया गोटे सुइटेबल नल मैट्रिक्स से तो मल्टीप्लाई करिवा हला अच्छा सुइटेबल कोन हम कहबी टिके अपेक्षा करो देन A into O equal to O into A equal to O हला अच्छा A into O कोन होइठी आगे A into O डिफाइन हवा दरकार जे कोन से दिटा मैट्रिक्स ता मल्टीप्लाई कर परिबानी सेट पे हम कहउछनी सुइटेबल नल मैट्रिक्स बोली सुइटेबल नल मैट्रिक्स माने A रो जेतिकिटा कॉलम थिबो O रो सेतिकिटा रो रहिबा दरकार नंबर ऑफ columns of A first left side पे number of for LHS this one right for LHS number of columns of A
should be equal to number of rows of O. এটা হিতে দরকার ହେଲା ସେମିତି O into A define ହେବା ଦରକାର O into A ପାଇଁ number of columns of O should be equal to number of rows of A. ଏତେ ସବୁ କଥା ହେଲେ ଯାଇକି matrix multiplication will be sorry এই ସବୁ ଜିନିଷ ହେଲେ then A into O equal to O into A will be equal to what? A null matrix. So ये ହେଲା तमर matrix product. Okay. आगु बढ़िबा next is transpose of a matrix. Next is transpose of a matrix. मनकर ए गोटे matrix अछि if A is a matrix then its transpose is कौन हबो ताल तार ट्रांसपोज का भी लिख परिबा कैपिटल ए ता ऊपर गोटे कैपिटल टी लिखिबा और ताको में ए भले भी लिख परिबा ए डैश बोल लिख परिबा आइदर कैपिटल ए पावर लिख दवा कोन कैपिटल टी और ताको में लिख दवा कोन ए डैश बोल हले अच्छा एटा केमिति आसीबो एटा बाहर करिया पहले कोन करिबा खाली ए मैट्रिक्स रो रो और कॉलम को बदले दबा आ किछ करिया नै ए मैट्रिक्स रो खाली रो को कॉलम कर दबा कॉलम को रो कर दबा which can be obtained by interchanging rows and columns of A. ताले में खाली A रकम करिवा रो को कॉलम कर दवा कॉलम को रो कर दवा रो को कॉलम कर दवा कॉलम को रो कर दवा और then जो मैट्रिक्स आसीबो that matrix will be called as what the transpose of the given matrix. अच्छा केमती मन कर this is a matrix is -3 2 1 1 -2 4. So this matrix is having 2 rows and 3 columns. 2 rows and 3 columns. ताले यारा transpose नहीं जबा A transpose row को column कर दबा. So first row will become first column. हला तमन 8 total टा मोरो 80 पड़ेला हला अच्छा similarly second row will become second column it also second row see 80 पड़े आसीबो 1 -2 4 second row टा second column पड़े first row first column हे गला second row second column हे गला so this is the new matrix or the transpose तल देखो यार ऑर्डर हम रह गला केते 3 cross 2 सेतला 2 cross 3 ए कोन गला 3 cross 2 हे गला अच्छा ए मैट्रिक्स ट्रांसपोज रो भी प्रॉपर्टी अछि मैट्रिक्स ट्रांसपोज रो प्रॉपर्टी कोन प्रॉपर्टी यार properties of transpose अच्छा मन करो ए गोटे मैट्रिक्स K is a constant is a matrix K is a constant then K a total transpose
Ka total transpose. That will be equal to K times A transpose. Ka total transpose will be K times A transpose. Second one, A into B whole transpose will be equal to B transpose into A transpose. A into B total transpose will be B transpose into A transpose. Third one, A plus minus B transpose. हम दुटा मैट्रिक्स हम ऐड करछोंदी किबा सबट्रैक्ट करछोंदी ताकर ट्रांसपोज ले कोन हबो this will be A transpose plus minus B transpose हला A transpose plus minus B transpose is pala these are the properties of transpose अच्छा ए ट्रांसपोज रो बहुत इंपोर्टेंस अछि for two special matrices data special matrix ପାଇଁ a transpose ର ବହୁତ importance ଅଛି those two matrices are called as symmetric matrix and skew symmetric matrix what are symmetric matrix ହେଲା ଆଉ what are skew symmetric matrix या ପାଇଁ transpose ର ବହୁତ requirement ଅଛି other one is skew symmetric matrix. अच्छा symmetric matrix कौन? Symmetric matrix is got a square matrix. ये got a square matrix. It is a square matrix. Alga matrix symmetric है परिबो नहीं. It is a square matrix such that A transpose equal to A. It is A transpose equal to कौन हबो A हबो. तामने में रो और कॉलम को एक्सचेंज कर देले भी सेम मैट्रिक्स पाइबा किसी डिफरेंट मैट्रिक्स पाइबा नहीं ताले से मैट्रिक्स हम कोन कहया गोटे सिमेट्रिक मैट्रिक्स हला स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कोन ये भी से स्क्वायर मैट्रिक्स it is also a square matrix किंतु एठी A transpose will be equal to minus A एठी किंतु जदि हम A transpose बार करिबा A transpose will be equal to what minus A symmetric ପାଇଁ A transpose will be equal to A skew symmetric ପାଇଁ A transpose will be equal to minus A हला अच्छा देखो एग्जांपल मु दो जोची सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक रो अच्छा this matrix you see take 1 minus 5 1 minus 4 minus 4 minus 5 minus 4 4
This is a matrix. So it is a square matrix. Here is the transpose nova. Tala for first row, first column is go. So we'll get 6, 1, minus 5, 1, minus 4, minus 4, minus 5, minus 4, 4. देखो a matrix जहाँ थिला a matrix भी से same as so that is why this is a symmetric matrix. अच्छा skew symmetric matrix देखिबा. Another example. This matrix you see a equal to 0, minus 5, minus 3, 5, 0, minus 6, 3, 6, 0. Okay. अच्छा एबे जदि एठी A transpose बार करिवे, if I'll find out A transpose, that will be 0, minus 5, minus 3, 5, 0, minus 6, 3, 6, 0. अच्छा एबे जदि minus A बाहर करिवे, I'll find out minus A. Minus A माने यार सब एलिमेंट रे गोटे माइनस मल्टीप्लाई कर दबा. Then I'll get 0, 5, 3, minus 5, 0, 6, minus 3, 6, 0. देखा A transpose is equal to minus of A. A transpose is equal to what? Minus of A. So this matrix is a skew symmetric matrix, but this matrix is a symmetric matrix. Okay. अच्छा या पर बेस करिकी गोटे theorem अछि से theorem टा बे प्रूव करिबा. There is a theorem. आ ये theorem पर बेस करिकी भी क्वेश्चन अछि हले. अच्छा theorem कोन prove that every square matrix can be expressed as the sum of a symmetric and a skew symmetric matrix. हमें प्रूव करिबा जे सब स्क्वायर मैट्रिक्स को गोटे सिमेट्रिक आ गोटे स्क्यू सिमेट्रिक रा में सम रे एक्सप्रेस करि परिया बोली. ओके या पर बेस करी क्वेश्चन भी अच्छी. अच्छा देखा प्रूव केमरे होबो. Suppose A is a square matrix. A मन ग्राउंड है स्क्वायर मैट्रिक्स हो. ताले हमें A को लिखि परिबा ए थ्योरम अनुसार we can write A as the sum of a symmetric and a skew symmetric matrix. हला. अच्छा मु चाहिले A टा को एमति लिख परिबे half into A plus A transpose plus A minus A transpose. एमति लिखिए half into A plus A transpose
plus A minus A transpose. ହେଲା देखिए half into A plus A transpose plus A minus A transpose. अच्छा देखो एटा काहे होची देखला एट जदी A transpose कटि गला A transpose कटि गला ताले हम पाइले half into 2A इधर मिसी गले केता होची 2A होची half into 2A is what A. अच्छा एबे एटा को मैं लिख परिया पुनी चाहिले half into A plus A transpose plus half into A minus A transpose. ताले मोर दीटा मैट्रिक्स रो सम रे एक्सप्रेस हे गला दीटा मैट्रिक्स रो सम रे एक्सप्रेस हे गला एबे मु प्रूव कर देबी एंको भितर गोटे होची सिमेट्रिक आ गोटे होची स्क्यू सिमेट्रिक एटा को सपोज हमें p बोली नै जिबा एटा को सपोज हमें q बोली नै जिबा हला ताले हम प्रूव करबा गोटे होची कोन सिमेट्रिक आ गोटे कोन हो स्क्यू सिमेट्रिक अच्छा p कोन हमरो p same as half into A plus A transpose. This is P. अच्छा एबे P रो हमें ट्रांसपोज नबा P रो ट्रांसपोज that will be equal to half into A plus A transpose total transpose half का कांस्टेंट तार किसी रो कॉलम नहीं सेम रहइबो so is कहते A plus A transpose तारा ट्रांसपोज is चले और this will be equal to half into A transpose plus A transpose रो ट्रांसपोज कारण हम पढ़िथिले A plus B total transpose हुए A transpose plus B transpose so that will be equal to half into A transpose plus A or it is half into A plus A transpose देखला से P से तो समान है गला हमें P जहां नहीं तले P रो ट्रांसपोज से समान आसला ताला हम कहि परिबा so P is symmetric matrix P is a symmetric matrix कारण P रो ट्रांसपोज P से तो समान है गला अच्छा एबे सेमती Q टा कोन होस देखिबा Q हमर पिला half into A minus A transpose ताले Q रो ट्रांसपोज हबो half into A minus A transpose whole transpose अच्छा half का कांस्टेंट समझ रहला तो A minus A transpose total transpose अच्छा अबे हम पढ़थिले A minus B रो ट्रांसपोज हुए A transpose minus B transpose ताले एटा इज half into A transpose minus A transpose रो transpose or it is half into A transpose minus हले गोटे मैट्रिक्स रो ट्रांसपोज नै कि पुणी थोर जे ट्रांसपोज नै जिबा ताले से समान रहि जबो और एक हम लिख करे minus half into A minus A transpose so this is same as minus Q so Q टा कोन गेला ताले skew symmetric ताले सब मैट्रिक्स को मैं दीटा मैट्रिक्स रो सम रे लिख परिबा गोटा हो सिमेट्रिक टा इठा में देखेले सिमेट्रिक टा होचे हाफ इनटू A plus A transpose एटा आउट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक टा कहते
up into A minus A transpose. Okay. So P टा symmetric और skew टा कौन आला? Q टा आला skew symmetric. अच्छा. One minute.